रात दिन मेहनत से लिखी जो तकदीर की इबारत है, रात दिन मेहनत से लिखी जो तकदीर की इबारत है, मंजिलें पास आएंगी जब हिम्मत की रफ्तार बरकरार है। पर हर पल मेहनत का जो बोझ उठाया है, पर हर पल मेहनत का जो बोझ उठाया है, सुकून का दम घुट जाएगा। राह की ठोकरें सिखाएगी, आराम भी जरूरी है वरना सब छूट जाएगा। Good morning and welcome back, friends, to another episode of Money Mindset Master with Vikas Joshi. Friends, in this pursuit of financial freedom and success, one's mindset towards money is crucial. Money Mindset Master with Vikas Joshi transforms how you perceive and manage your finances, shifting from restricted mindset to a growth mindset. This program emphasizes moving from merely accumulating the wealth to achieving and long-term financial stability and security by overcoming limiting beliefs and fostering a proactive approach to wealth creation. You gain insight in the strategy of sustainable financial growth. This transformative journey unlocks your full financial potential, leading you to more empowered and financially secured future. ये श्रृंखला आपकी प्रेरणाओं को जगाती है और आपको वित्तीय स्वतंत्रता, समृद्धि और संपन्नता की दिशा की ओर मार्गदर्शन कराती है। ये एक कोशिश है। दिस इज एन एफर्ट सो एज टू इम्प्रूव ऑन योर financial stability, wealth creation, management. So we have started this series by setting up the goals. Then we work the path to reach the goals. And in the process, we also self-analyzed ourselves, our strengths and weaknesses. We came to know about the things which were with the potential, the skills which we were unaware of. And we started harnessing them towards our better future. We utilized our strength to reach our goals. And we utilized our weaknesses to improve on, so as to think as a failure, as an opportunity to work on for a better future. And we successfully achieved many of our goals. So friends, in this process, we came across one more interesting term, limiting beliefs. The limiting beliefs which were ingrained in our mind, not by ourselves, but unknowingly. कभी एल्डर्स घर में बोल रहे थे, कभी लोगों ने कहा, कभी दोस्तों ने कहा, ऐसे अपने मन में धाराएं बनती चली गई. Now those were the most important part for the success because those were the biggest hurdles in your life. आप कोई भी काम करने चले जाओ तो आपका माइंड आपके ब्रेन को बोलता है, अरे नहीं नहीं ये नहीं तुम कर सकते. दैट इज लिमिटिंग बिलीफ. बिकॉज कहीं बचपन में आपके मन में यह धारा बन चुकी थी, किसी ने कहा होगा, नहीं ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, या सामने वाला देखो कैसे काम कर रहा है, या उसके देखो कैसे वो सक्सेसफुली कर रहा है, तुम क्यों नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि तुम कर ही नहीं सकोगे. ये जो नहीं कर सकोगे निगेटिव जो था वो आपके मन में घर बना गया. बट यू जस्ट इग्नोर्ड इट, यू डिडंट टेक इट टू द लॉजिकल एंड, एंड दैट इनग्रेन्ड बिलीफ नाउ हैज बिकम अ बिग हर्डल फॉर योर सक्सेस. क्योंकि आप कोई भी काम करने जाओ तो आपका माइंड पहले ही बोल देगा, नहीं नहीं ये तुम नहीं कर सकते. क्या सच्चाई है देखी नहीं थी हमने अपने आप को जब टटोला, when we started thinking of our skills, then we realized that we do have much more skills, we do have much more potential. But this ingrained limiting belief was preventing us from going further. So I have addressed almost as much possible as I can think. कोई आदमी कैसे सोच सकता है, इतने सारे लिमिटिंग बिलीफ्स मैंने एड्रेस कर दिए. I will be addressing
amongst them the most important part also which commonly observe किए जाते हैं, so that we address them immediately. And you don't have to go back to any other videos, but you can refer to many of the videos. So friends, when we are dealing with these limiting beliefs, now we came across another belief. जहां पे वो लिमिटिंग बिलीफ था वो तो हमने निकाल दिया. नाउ इट हैज टर्न्ड इनटू आवर कॉन्फिडेंस, बट दैट कॉन्फिडेंस इफ लेफ्ट अनअटेंडेड, नाउ इट हैज कन्वर्टेड इनटू ओवर कॉन्फिडेंस. सो जो लिमिटिंग बिलीफ, जो धाराएं आपने निकालनी चाहिए आपने निकाल भी दी, लेकिन वही धाराएं अगर अनअटेंडेड रख दी तो वो अहम में बदल जा रही है. And that is now again restraining you from your success, because that has converted your confidence into overconfidence. So there is a thin line of difference, friends, between confidence and overconfidence. तो कई ऐसी बातें होती है जो हम इग्नोर कर जाते हैं ऑन द फेस ऑफ दैट पर्टिकुलर फ्रेज और वर्ड और इनग्रेंट बिलीफ. मतलब हमने ऐसा सुना तो बस ऐसा ही होगा, हमने उसके बारे में ज़्यादा सोचा नहीं. फॉर एग्जाम्पल टुडेज दिस सच टाइप ऑफ बिलीफ इफ लेफ्ट अनअटेंडेड विच कैन हिंडर योर प्रोग्रेस इज सक्सेस रिक्वायर्स कॉन्स्टेंट हार्डवर्क. ये तो सब कहते हैं, अगर मेहनत करो तो सक्सेस मिलेगा ही, सच्चाई है. लेकिन वो मेहनत कितनी करनी है, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. So this belief emphasizes the importance of sustained effort and diligence in achieving the goals. Correct? Agreed to that. That success requires constant hard work. Yes. It suggests that consistent, focused work is the key to overcoming obstacles, improving skills, and reaching desired results or outcomes. This mindset values perseverance and dedication, implying that true success is not easily attained but is the result of ongoing commitment or committed towards your focused goal or ongoing commitment and labor. कष्ट करना चाहिए. It highlights the necessity of putting in the time and effort to see results, underscoring that success is often a marathon rather than a spirit. That it is not a small race, it is not a sprint. It is a marathon race. So you have to take efforts. You have to take committed efforts. That is true. Up to this is what is required to achieve the goals. Correct. Yet this belief, while promoting diligence and perseverance, can become a hindrance to self-development when it leads to imbalanced lifestyle and neglect of personal well-being. सिर्फ कष्ट करते रहो, भाग रहे हो, बट इग्नोरिंग अवर सेल्व्स. पर्सनल वेलबींग देखा ही नहीं, अपनी तबीयत की तरफ ध्यान नहीं दिया, खुद की तरफ ध्यान नहीं दिया, तो यही बिलीफ इज नाउ बिकमिंग एन हिंड्रेंस टू योर प्रोग्रेस. दिस माइंडसेट कैन ड्राइव यू टू ओवरवर्क देमसेल्व्स, disregarding the need for rest, leisure, and reflection, which are the essential for growth. It can create a relentless pressure to always be productive, causing burnout and diminishing creativity and innovation. Furthermore, this belief may foster a tunnel vision where individuals focus solely on work-related achievements, ignoring other crucial areas of life such as relationship, health, and personal fulfillment. Isn't it? Ultimately, an unrelenting emphasis on hard work without consideration for balance can impede overall self-development and well-being. So friends, hard work, success requires constant hard work. It is true. लेकिन अपनी तरफ ही ध्यान नहीं दिया, सिर्फ काम करते रहोगे, कमिटेड एफर्ट होना चाहिए. But there are other responsibilities also in life. You have to maintain the relationship, you have to take forward your family members, you have to take along your team members. If you are ignoring that, you will be the sole rider. अकेले रह जाओगे. और साथ में
कई बीमारियां भी होंगी, बिकॉज यू आर इग्नोर्ड योर हेल्थ। आराम भी जरूरी है फ्रेंड्स, रेस्ट इज अ नेसेसिटी। मैं हमेशा कहता हूं एटलीस्ट 6 आवर्स स्लीप इज द नेसेसिटी ऑफ लाइफ। 6 to 8 आवर्स नींद होनी चाहिए। अगर नहीं कर रहे हो तो यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन योर फ्यूचर और योर बेटर फ्यूचर, because you are compromising on your health. If your health is not supportive, you will not be able to dedicate yourself towards the focused approach or towards your goals. तो हार्ड वर्क करना चाहिए लेकिन रेस्ट भी लेनी चाहिए। हार्ड वर्क करना चाहिए लेकिन टीम वर्क भी होना चाहिए। हार्ड वर्क करना चाहिए लेकिन रिलेशनशिप डेवलपमेंट भी होनी चाहिए। अगर यहां पे हम चूक गए तो हार्ड वर्क करते रहोगे लेकिन रिजल्ट्स देरी से आने वाले हैं, बिकॉज धीरे धीरे एवरीथिंग इज गोइंग टू लिव आउट योरसेल्फ। बिकॉज अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, नाउ हार्ड वर्क करोगे भी तो यू विल नॉट बी एबल टू कॉन्सेंट्रेट मोर, सो द स्पीड इज रिड्यूस्ड, सो ऑल्सो द स्ट्रेस इज इंक्रीजिंग। क्योंकि आप हमेशा सोचेगा अरे आज का दिन तो चला गया, अभी कल करना पड़ेगा। स्ट्रेस इज इंक्रीजिंग, speed has been reduced. That should not happen, friends. It should be consistent. So you have to be very planned. You have to be very defined. Goals तभी मायने रखेंगे जब आप उसे enjoy कर पाएंगे। Achievements तभी मायने रखेंगी जब आप उसे enjoy कर पाएंगे। When you achieve your goals, you should be able to celebrate it. With the team members, with the family members, with the well-wishers, the people who were with you, with the same vision, with the same path, treading the same path with you. That is important. Hence friends, सिर्फ कष्ट करते रहोगे तो सक्सेस आएगा, लेकिन if you are compromising on all these things, then you are compromising on your better future or sound future or healthy future, isn't it? So you should have the work ethic. That is, you have to have the slot hours कि इतने टाइम में इतना काम करना है, इतना ही काम करना है, इससे ज्यादा नहीं करना है। Don't put extra efforts unnecessarily. When you have planned out everything, now you have to work out the plan. बस उसी पे ध्यान देना है। Because अगर नहीं कर रहे हो तो यू विल बी overburdened और exhausted quickly. So persistence is the key. रोज थोड़ा थोड़ा लेकिन जरूरी उतना, एज पर प्लान उतना काम तो करना ही है टुवर्ड्स आवर गोल्स, बस उतना ही करना है। सो persistence, consistency gives you the good results, friends. So as you improve on your skills, अब जब आपको पता चल गया कि मेरे you are already planned out the things, now you are aware how what skills you require to develop so as to execute the plan, so as to work out the plan. So you improve on your skills rather than just merely blindly working hard without a defined path. It's of no use. It's like marching on the same place. So friends, you have to improve on your skills. You have to improve on your productivity. Because if you compromise under the pretext that you have to work hard so that achieve the goals, then you are compromising on your future, on your productivity, on your results. Because stress, if it comes in, now it is eating out your time also and your productivity also. So don't allow the stress to overcome you. The goals achieved are to be celebrated so that you realize that the planned efforts and working out the plan has given you the results. The persistency, the consistent efforts has given you the results. And when you realize this,
This belief that success requires constant hard work cannot be taken to the extreme end. Now you realize that the planned effort, the consistent efforts, the daily persistency is going to help us. That is, when you are self-disciplined, everything is in order. Because you yourself have decided that I will be acting as per the planned thing, as per self-disciplined thing. When I am disciplined towards myself, towards my leisure time, towards my sleep time, towards my work time, yes, now I cannot be a failure. Neither this phrase that success requires constant hard work can be taken to the extreme, because I am now disciplined. This will create a reputation that this person is a very disciplined and timely person. He gives the results in time. He is very planned. He is very active. He is persistent. All these phrases will automatically accompany your name, because that is creation of reputation. Because you are disciplined, you have given the slot hours. You have not taken this phrase that success requires hard work to an extreme end. सिर्फ काम करते रहो, लेकिन खुद की तरफ ध्यान ही नहीं, तबीयत बिगड़ती जा रही है, लेकिन काम किए जा रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है कि प्रोडक्टिविटी कब कम हो गई। इसीलिए मैंने कहा, रात दिन मेहनत से लिखी जो तकदीर की इबारत है, मंजिलें पास आएंगी जब हिम्मत की रफ्तार बरकरार है। पर हर पल मेहनत का जो बोझ उठाया है, सुकून का दम घुट जाएगा। राह की ठोकरें सिखाएगी, आराम भी जरूरी है, वरना सब छूट जाएगा। I sign off on this note, friends, and we meet again in another episode of Money Mindset Mastery with Vikas Joshi. Till then, bye bye. Enjoy the day, friends. Enjoy the life. It is a one-time activity. Do enjoy.